Calculate number 1 a momentum and de Broglie's wavelength of electron accelerated through a potential difference of 56 volt. तो मोमेंटम एंड डी ब्रोगलीज, तो पहले ध्यान रखना इस क्वेश्चन में जो कोई बच्चे का मिस्टेक हुआ, पहले उसने वेवलेंथ निकाल दिया उसके बाद मोमेंटम निकाला, ऐसे नहीं, जो सीक्वेंस में पूछा है उसी सीक्वेंस में आंसर करना, पहले मोमेंटम उसके बाद वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपन एम भी यूज़ कर सकते हो, नहीं तो पोटेंशियल दे दिया तो पोटेंशियल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना तो जल्दी हो जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो V इक्वल्स टू 56 वोल्ट, H इक्वल टू 6.6 टेन टू माइनस 34, M इक्वल्स टू 9.1 टेन टू माइनस 31, E इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इतना हिसाब है, कूलम लिखा करो, कूलम, ठीक है। P इक्वल्स टू अंडर रूट 2 m k इज द काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV है ना। पोटेंशियल आ गया, दैट इज 10 टू द माइनस 50, तो 16.30 10 टू द पावर माइनस 24, सेवन टू 10 टू द पावर 24, 16072, that is P equals to 4.04 10 to minus 24 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, करेक्ट है। लैम्डा के लिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो, लैम्डा इक्वल टू एच अपन पी, एच हो गया और मोमेंटम आ गया, एच तुम्हारा 6.6 10 to minus 34 डिवाइड 4.04 10 to minus 24, दैट विल बी मीटर। ओके, और दूसरा इससे भी कर सकते हो, V इक्वल्स टू 56 वोल्ट, 1.227 अपॉन अंडर रूट 56, दैट इज नैनोमीटर, तो 1.227 टू अंडर रूट 14 का रूट कितना होगा, 7.3 into 2, का 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.5 अराउंड आ रहा है। ओके, ठीक है, 3.5 अराउंड, ठीक है, करेक्ट।